ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। दुर्गा सप्तशती तृतीयोऽध्यायः। आइए सज्जनों, इस वीडियो पर हम दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय को शुद्धता स्वर लय के साथ उच्चारण श्रवण करेंगे। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करें। नमो नमः। भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत संस्कृति और संस्कार से है। आइए हम इसको बनाए रखने में अपना योगदान करें। आप सभी सनातनी जन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अथ तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ ओद्भानुसहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियां देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच। निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद् ययौ योद्धुमथाम्बिकां सा देवीं सरवर्षेणा ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य क्षिप्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद चाधनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याध चैव गात्रेषु छिन्नधनवानमासुगैः सच्छिन्नधनवाभिरथो हताशुभो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं सा कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरभिबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भगनां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत ततः सिंहो समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहौ युद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रीदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं वास्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरेर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काशीतुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरचूर्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाश्चिक्षेप चाननाद च वेगभ्रमणविच्छूर्णा महीतस्य व्यसीरयत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः सतसो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाधमात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तदवधाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहि संरूपं सोऽपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिसंवपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहाशारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज चढ़ं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीरेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत प्रहर्षं चापरं जगमुः सकला देवतागणाः तुष्टुबुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैरमहर्षिभिः जगुरगन्धर्वपतयो ननिऋतुश्चाप्सरो गणाः। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरनाम तृतीयोस्तवः। श्री दुर्गाचरणकमलार्पणमस्तु। श्री जगदम्बिकायै नमः। नमो नमः। भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत संस्कृति और संस्कार से है। आइए हम इसको बनाए रखने में अपना योगदान करें। आप सभी सनातनी जन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।